कितना क्रेजी फीलिंग होता होगा फॉर विराट कोहली कि द मोमेंट ही जस्ट स्टेप्स इनटू द स्टेडियम एंड एवरीबॉडी गो क्रेजी, कोहली 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 कोहली। सो उसको कितना ज़्यादा प्रेशर होगा यार, इफ ही वोंट स्कोर, यू नो देयर इज अ सेंस ऑफ नॉट गुड फीलिंग विच इज देयर, एंड आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा टू रीच देयर। अभी माइकल जैक्सन की मूवी में एक सीन था, ही वाज इन द पूल एंड ही वाज जस्ट रिलैक्सिंग, हिज ब्रदर आस्क्ड कि क्या कर रहा है, तो ही सेड कि आई एम चैनलिंग विद द गॉड, इफ आई विल नॉट बी टेकिंग दोस आइडियाज फ्रॉम द गॉड, समबडी एल्स विल टेक इट। एज मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी। सो आकाश गुप्ता का ना एक स्टैंड अप है, तो उसने बताया आकाश गुप्ता क्या बोलता है, कहता कि हमारे को मनाली में बस यूं ही घुमानी पड़ती है उल्टी करने के लिए, बस वो कल ना वही मेरे विजुअल में आ रहा था, बहुत इतनी ज़्यादा बस घूमी है, बस पूछो मत। So guys, today it's the match of RC versus पंजाब। बहुत ज़्यादा क्रेजी फीलिंग आने वाली एंड एक्साइटेड एक्चुअली। बड़ी मेहनत से हम लोगों ने टिकट कराई एंड एक टिकट डिस्ट्रिक्ट से ली, एक टिकट ब्लैक मिली, एक टिकट गलती से कर दी, फिर मैंने उसका स्टोरी पोस्ट किया। एक्चुअली इट वॉज अ वेरी रोलर कोस्टर राइड। फिर मैंने केम टू धर्मशाला, इस होटल को बुक कराया था, वो होटल ने बोला ये तो हमारी गलत रिजर्वेशन है। Then we ended up buying I should not tell the cost, but a super expensive hotel last moment. So yeah, pretty expensive match this is. So क्या लगता है कौन जीतेगा आज? किसके लिए आपने पैसे खर्च किए हैं? मैं तो एंटरटेनमेंट के लिए हूँ, मैं तो KKR फैन हूँ, कोई भी जीत जाए, बट हाँ पंजाब हारना नहीं चाहिए। एक्चुअली पंजाब हारनी चाहिए क्योंकि RCB और चेन्नई क्वालिफाई कर चुके हैं पहले अच्छे से, तो अगर पंजाब हारेगी तो KKR के चांसेस सॉलिड रहेगी, बट मैं पंजाब को सपोर्ट करता हूँ फिर भी। तो आप धर्मशाला पहली बार आए हैं, तो कैसा है यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग कैसा ट्रीट कर रही है आपको धर्मशाला ओवरऑल? मतलब I just love when I came to hills because you seems very insignificant. There are so big mountains, such a wide landscape जो हम देख ही नहीं पाते हैं। कल बारिश हो रही थी, you know, मतलब उस वहाँ तक बारिश दिख रही थी and you know so the work that you do ना like looks very insignificant and that's extremely important। मतलब मुझे भी याद है, ठीक है, when I came to Goa for the first time, so गोवा से when I came back I was so fresh, then only I started this D2C with Arjun। मतलब गोवा जाने से पहले 10 महीने हम सोचते थे इंस्टाग्राम करते हैं, but we were never having a reason to do it। But when we went there, it gives you time to rethink of everything that you are doing। You know the work that you do now looks extremely insignificant when you see such a wide landscape जो आप अपने daily life में नहीं देख पाते, because in your daily life you're so much into that continuous 9 to 9 process। For us it's not 9 to 5 ना, not even 9 to 7, it's 12 into 7। यार ये तो ज्ञान ही देता ना, लोगों को पसंद नहीं आता। कहते हैं कि दिस इज नॉट अ इन्फॉर्मेटिव वीडियो, यू आर गेटिंग आउट ऑफ योर नीश नाउ। ऐसे कमेंट आते हैं, डू नॉट फॉल फॉर ट्रैप। यार so I see, you know, whenever I try to post something outside the niche, I get a lot of comments like कि आप इस ट्रैप में मत पड़ो और you're getting out of niche now। तो बहुत ज़्यादा वो नहीं मिलता, but you know it's not always business guys। I cannot always keep on telling about कि ऐसे टीम को मोटिवेट करो, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाओ, but the today video is more about give yourselves time as an entrepreneur, as a leader, you need to have a time to rethink and reabsorb the processes, because अभी माइकल जैक्सन की मूवी में एक सीन था, I'll explain it again। एक बार एक वीडियो हमने और डाला छोटा सा context, which I just love the scene। He was in the pool and he was just relaxing, his brother asked कि क्या कर रहा है, तो he said कि I'm channeling with the God, because if I will not be taking those ideas from the God, somebody else will take it। And I was like, dude, it's very weird। Then I came back, I did some YouTube research, I got some videos which were explaining। So actually a lot of people have done this। The ideas are already there in the market, the ideas are already there, but you need to be free in order to take it, in order to absorb those new ideas। I still remember हमने D2C with Arjun start किया था when I went to Goa। मैं गोवा से आया and the first thing in the morning I did was starting my Instagram page। दिवाली की छुट्टियाँ थी last year, 10 दिन का छुट्टियाँ था, everybody was at home। Came back, the first day, the first meeting I did was the YouTube Unfiltered। So I had seen myself doing some new projects, new ideas, good innovations whenever I get out of the process
and I give myself time to think and to enjoy the process even. Because you know, it's a very sad part about entrepreneurship, and I don't feel it's just entrepreneurship, it's about life. The time will always not be good or will not always be bad, but when it is good, enjoy the fullest, but when it is bad, try very hard. Because last 3 months has been not very good for me because revenues were low, the Facebook was highly fluctuative, and I have posted a lot of videos telling about my work schedule, and it was been extremely tight. So you know, when you're working in that schedule, trust me, those new ideas won't come to you. 110% it won't, because you are in a regular firefighting process of calling clients, talking to teams, getting new hirings, taking interviews, doing increments, and it's so busy as a process that you don't get time to absorb. But these 3 days like this gives you that time. And every time I have went to somewhere after coming back, it has been like I get a perspective. And you know, the best part, I'll tell you, whenever I go to some place and I find somebody who knew me and they came to me, said, "Yeah, you D2C with Arjav," that's the different level of feeling, and that's make me go that extra mile. Because you know, I was just talking to my friends yesterday. कितना crazy feeling होता होगा for Virat Kohli कि the moment he just steps into the stadium and everybody go crazy. Kohli, 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 Kohli. So उसको कितना ज़्यादा प्रेशर होगा यार, क्योंकि now he is entering a stadium with a 50,000 people expectation. He has to score. If he won't score, you know, there is a sense of not good feeling which is there, and आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा to reach there. So that gives me that push to continuously create this content, because the schedule that we have, the way we operate, it's extremely tough to post every day. In fact, I was talking to Aditya yesterday, day before yesterday. So I told him कि यार आदित्य, हफ्ते में 2 बार पोस्ट कर सकते हैं. देन हम खुद ही बात करते करते पहुंचे यार कि हफ्ते में 2 बार पोस्ट करेंगे ना, वो जो एसेंस है ना हमारा, वो मिस हो जाएगा. एंड आई थिंक that's what makes us and जो हम बनना चाहते हैं, the greatest D2C ecosystem, उसके लिए हमारे को beyond limits तो पुश करना पड़ेगा 100%. उसके करे बिना नहीं हो सकता. So yeah, that's our beyond limit pushing, and hoping कि like today we are coming to Dharamshala just to see Kohli. One day somebody will come to some place just to see us, and that is what keeps us motivated, and that's why we keep on pushing that extra mile. So yeah,